So hello students, let's come to the next topic of determinants. We are, I think, going through the third type of determinant simplification. Right, so I have written two different questions rather, which has been in board examinations recently. So this was the question that was there in board examinations. अगर मैं पहले इसी को सॉल्व करूं जो राइट साइड पे क्वेश्चन लिखा है मैंने, so if you look at this, what is asking us to prove is a minus 1 का होल क्यूब. और यहाँ कहीं से भी मुझे a-1 दिख नहीं रहा कॉमन. ऐसा नहीं है कि नहीं है, बहुत सारे ऑप्शन है, यू कैन फाइंड इट आउट. बट एक बड़ा बेसिक सी चीज मेरे को यहाँ पे दिख रही है. द थर्ड कॉलम is 1 1 1, and we know that when all the entries of a row or column are 0, so we operate so that we get two zeros. So here we can operate, we take the determinant that is taking left hand side, and when you operate on r1 minus r2, and on r2 you operate r2 minus r3. You cannot have the third operation, you know this very well, क्योंकि r1 पे ऑपरेशन लग गया, r2 पे लग गया, दोनों चेंज हो गए. r3 पे ऑपरेशन नहीं लग सकता इनको इस्तेमाल करते हुए. सो क्या बनेगा हमारे पास? If we talk about the left hand side, so it will be this minus this, 2a gone, this will be a square minus 1, this will be 2a minus a is a, then 1 minus 2 is minus 1. 1 minus 1, that's actually, that gave us this operation. And again, twice of a plus 1 minus 3. So it will be 2a minus 2. Talk about this, a plus 2 minus 3, a minus 1. 1 minus 1 is what? 0. And the third will be undisturbed. Now what can you do here is actually, now you can take a minus 1 common from here, and you can take a minus 1 common from here. So it will be a minus 1 ka whole square, isn't it? Right, and what are you left with? This will be a plus 1, the next will be 1, and the next will be 0. Talk about this, a minus 1 comes out, you're left with 2, a minus 1 comes out, you're left with what? 1, and it will be 0. And what will be this? 3, 3, 1. Now the choice is yours, whatever you want to do. If you want to again operate, you want to make one more 0, so what can you do is, you can think about this. And now 1 minus 1 will give you 0. Again, if you operate r1 minus r2, so it will be a minus 1 whole square. This will be a minus 1. 1 minus 1 will be 0. 0 minus 0 will be 0. 0 will remain intact. And this will be as it is 2, 1, 0, 3, 3, 1. And now there is an interesting thing. You can take a minus 1 common from r1 also. So it will be a minus 1 ka whole cube. 1, 0, 0. Expand with first row. You will get the answer. Done and dusted. That was a 4-mark question in one of the board examinations in 2019 only. Now let's talk about this one. This is quite an interesting question, and this is quite a dominating topic here. इस क्वेश्चन में बड़ा सुंदर सा पैटर्न यूज होता है. क्या होगा इन क्वेश्चंस में? 3 डिफरेंट नंबर्स यूज हो रहे हैं अगर आप देखेंगे, x, y और z, और ये नंबर्स यूज होते हैं पेयर वाइज. जैसे पहले x y आया, फिर y z आया है, फिर z x आया है. और अगर आप x y y z और z x, राइट, इनका अगर आप LCM कैलकुलेट करोगे, इट इज x y z. दैट इज समथिंग यू कैन टेक आउट. ठीक है बॉस, यही रूल लगना है इसमें, यही इसकी आत्मा है. जिस बंदे को ये टॉपिक समझ आ गया, अब इसके बाद मैं एक और टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन उठाऊंगा. दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. बट इफ यू अंडरस्टूड दिस, ठीक है, आपको जितने मर्जी टॉपिक पे क्वेश्चन आ जाए, एक सॉल्व एग्जाम्पल है तुम्हारी टेक्स्ट बुक में, एक अनसॉल्व क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.2, ठीक है, और एक ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है. सो इसमें करेंगे क्या हम लोग, जिस जिस चीज़ की कमी है उसके एलसीएम में, उसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, तो अभी तीनों एलिमेंट कॉलम में है, तो रो वाइज हम इनको क्या करेंगे, इसमें किसकी कमी है, x की, इसमें किसकी कमी है, y की, और इसमें किसकी कमी है, z की. सो व्हाट यू विल डू हियर, यू विल मल्टीप्लाई रो 1 विद x, रो 2 विद y, and row 3 with z. Now the interesting part is, when you multiply a determinant with some non-zero scalar, the value of the determinant gets multiplied with that scalar. So what you need to do is, you cannot actually multiply, you have to multiply and divide. So when you take the left hand side
And now this is the type of operation we are doing for the first time. So you always write multiply and divide R1, R2 and R3 by X, Y and Z respectively. What happens when you divide them? All the things that will divide, they'll come outside. 1 by X into 1 by Y into 1 by Z will give you 1 by X by Z. ठीक है बेटा, इस पूरे को आपने x के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गया, और ये क्या बन गया. आई थिंक आई मस्ट रब ऑफ द नेक्स्ट सोल्यूशन. सो ये वाला क्या बन गया नेक्स्ट आपके पास, दिस वाज xy प्लस zx. एंड व्हाट अबाउट द नेक्स्ट वन, सेकंड रो को y से मल्टीप्लाई किया आपने, तो y is z square x square x by z, and what is this, y z plus xy. and what about the third, z से मल्टीप्लाई किया इसको, so it was x square y square into z, that was x y z, and this was x z plus y z. Alright boss, now one very interesting thing is there, please have a look. जो हमने एलसीएम लिया था उसने इस पूरे के पूरे कॉलम को क्या कर दिया, सेम कर दिया. सो कैन वी टेक एक्स वाई जेड आउट ऑफ दिस कॉलम और नॉट. सो व्हाट विल यू लेफ्ट विद एक्स वाई जेड अपॉन अदर व्हाट इज एक्स वाई. ठीक है, ये कैंसिल हो गया. व्हाट इज द फर्स्ट रो, एक्स वाई. अच्छा, वन थिंग मोर, इवन आई कैन डू वन मोर. इवन इफ यू लुक एट द फर्स्ट कॉलम, फ्रॉम द फर्स्ट कॉलम ऑल्सो you can have x y z common, है ना, इसके पास भी x y z कॉमन है ना बेटे. सो हम क्या करेंगे, तो इसमें इसका होल स्क्वायर हो जाएगा. एक बार फर्स्ट कॉलम से आ गया, दूसरी बार सेकंड कॉलम से आ गया, ये गेट एलिमिनेटेड. तो फर्स्ट कॉलम में क्या रह गया तुम्हारे पास, y z, यहाँ पे क्या रह गया z x, यहाँ पे क्या रह गया x and y. what are you left with, 1 1 1, and this is as it is. This is similar to I think second or third question of your exercise. I'm 100% sure all of you would have understood it. आपको दिखता है ना जब किसी एक रो या कॉलम में सारे एलिमेंट दो दो का सम हो रखे हों और आपको लगे कि उनका मिलता जुलता ये अलग रो या कॉलम में है, तो उसको हम हमेशा ऐड कर लेते हैं. आप यहाँ पे C3 पे ऑपरेशन लगा लो, C3 प्लस C1. सो क्या हो जाएगा, इट विल बी एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स. After this operation you will find that C2 and C3 will be proportional. And why should I tell you, when two rows or two columns are proportional, the value of determinant is equal to, you know it very well. Fine. So ये बहुत interesting question है. इसी के basis पे let's have another question from your textbook. Last question of the exercise 4.2 was also one of the very important question, has been there in exams so many number of times. The question is a square plus 1 ab ac, and again this is ab, this is b square plus 1, this is bc, this is ca, this is cb, and this is c square plus 1, and prove that this is equal to 1 plus a square plus b square plus c square. This is quite an interesting one, right boss? So this is to be proved. Again same case. So what did I tell you, क्या हो रहा है इसमें, एंट्रीज ये ए बी आ रहा है, ये ए सी आ रहा है, ये ए बी आ रहा है, ये बी सी आ रहा है, ये सी ए आ रहा है, ये बी सी आ रहा है. तो कुल मिला के अगर हम देखते हैं बहुत ज़्यादा डोमिनेंस किन चीज़ों की है, इन तीन टर्म्स की है. और अगर इन तीन टर्म्स के एलसीएम को मैं देखता हूँ, so that is equal to ABC. Right boss? कहने का ये मतलब है whenever there are three distinct variables such that they are pairwise present in the determinant, preferably we will take their LCM. और उस एलसीएम के लिए आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा. जब भी आप किसी रो को या किसी कॉलम को किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे, इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको उसके साथ उसको डिवाइड भी करना है. सो यहाँ पे व्हाट आई डू हियर इज,
मैं क्या करता हूँ, R1 को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय A, R2 को B और R3 को C। ठीक है बॉस, इन द लेफ्ट हैंड साइड आई एम टॉकिंग अबाउट। सो क्या हो जाएगा, 1/ABC विल बी आउट एंड when you multiply this with A, it will be A cube plus A square B, this will be A square C. It will be second row is with B, so it will be AB square B cube plus B square C, and it is with C, so it will be C square A C square B C cube plus C. Now एक चीज का और ध्यान रखना, अगर मैंने इसको रो वाइज जब मल्टीप्लाई किया है ना, तो मैं रो वाइज वापस कॉमन निकालूंगा तो वही क्वेश्चन आ जाएगा। इफ यू मल्टीप्लाई इट रो वाइज, टेक इट आउट, ठीक है, कॉलम वाइज, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी ऐसा ही हुआ था, अगर आप उसको कंसिडर करोगे वापस। सो नाउ फ्रॉम फर्स्ट कॉलम आई टेक ए आउट, फ्रॉम सेकेंड कॉलम बी इज कॉमन, फ्रॉम थर्ड कॉलम सी इज कॉमन। So when you take this ABC out, it will be ABC upon ABC. What are you left with? A square plus 1, that is B square, it is C square. What is this now? B taken out. A square, B square plus 1, C square. And from this C is taken out, what are you left with? A square, B square, C square plus 1. Right, sir? Now this ABC and ABC will get eliminated, and now if you look at the right hand side, it's pretty much clear visible from this determinant that you can think of an operation. So preferably you go with R1 plus R2 plus R3, so it will be 1 plus A square plus B square plus C square, 1 plus A square plus B square plus C square. So this will be 1 plus A square plus B square plus C square, 1 plus A square plus B square plus C square, 1 plus A square plus B square plus C square, and the rest of the entries will be exactly as they are. C square, C square, C square plus 1. So what will you do now, friends? You will take 1 plus A square plus B square plus C square out from the first row. And when you take it out, this will be out. It will be 1, 1, 1. And you know when all entries of a row or column are 1, 1, 1, what to do. You can handle it pretty well. Nice. So this was another interesting question based on the concept when pairwise entries are given. Okay. Now let's talk about the next question. Question number 13. Question number 13, another interesting question. It says that this is 1 plus A square minus B square, and then the next entry is twice of AB, and then this is minus 2B, and then this is twice of AB. The next one is 1 minus A square plus B square. The next one is twice of A. The next one is twice of B. That is minus twice of A. And the last one is 1 minus A square minus B square. And the answer is equal to 1 plus A square plus B square whole cube. This is another interesting question that can be asked in examinations. ठीक है भाई, अब देखते हैं। यहाँ पे ना तो कुछ कॉमन दिख रहा है, ना कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ हो पाएगा। लुक एट द राइट हैंड साइड, क्या चाहिए? 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सबसे पहली एंट्री को देखो, 1 प्लस ए स्क्वायर, साथ में क्या है? माइनस बी स्क्वायर। काश कहीं से 2b का स्क्वायर आता और वो इसको प्लस बी स्क्वायर बना देता, तो आपको सामने दिख गया 2b। तो यहाँ पे यू कैन थिंक ऑफ एन ऑपरेशन R1 पर R1, राइट बॉस? ये माइनस का है तो ये प्लस का होगा, तभी प्लस R3 से आया, लेकिन 2b स्क्वायर तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? b के साथ। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ वापस दोहराऊंगा यहाँ पे, मैंने आपको पहले भी बताया था प्रॉपर्टीज के टाइम,
कि जिस रो या कॉलम पर आप ऑपरेशन लगाओगे उसका जो कोफिशिएंट है वो हमेशा 1 ही रहना चाहिए, उसके बाद वालों में जिसको मर्जी मल्टीप्लाई या डिवाइड कर लो। अगर इसको आप b से मल्टीप्लाई कर देते तो आपका आंसर जो है वो b से मल्टीप्लाई हो जाता, राइट। सो देन यू वुड हैव मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड इट बाय दिस। तो इसीलिए आई एम अगेन रिपीटिंग इट, जिस रो या कॉलम के ऊपर आप ऑपरेशन लगाओगे उसका कोफिशिएंट यूनिटी होगा। एंड सिमिलरली यू कैन अप्लाई ऑन R2 as R2, राइट। सो दिस इज 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसमें से अगर प्लस करोगे तो ये माइनस टाइम्स AR3। दूसरा तरीका कहाँ से पता चल सकता था, जीरो बनाने वाला। तो वो कैसे था, ये ट्वाइस ऑफ ए बी है, तो इसमें से बी है तो इसको जीरो बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ए के साथ, और दोनों का साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। चेक करके देख लो ऑपरेशन क्यों बन जाएगा, राइट बॉस। एंड सिमिलरली आप यहाँ पे देख रहे थे ये 2ab है, इसके सामने रो वाइज कौन है हमारे पास -2 है, इसको b से मल्टीप्लाई कर दो, ऐड कर लो, जीरो बन जाएगा। दैट इज अनदर कॉन्सेप्ट दैट वी अप्लाई, अगर हमें वो ना दिखे जो हमें चाहिए वो, right? So when you apply this, what do you get on the left hand side? So here you get 1 plus a square plus b square, and here what you get is a 0. This will be interesting. So what do you get here is, this is -2b, right? And here multiplied it with v. Okay, -2b plus b is -b, right? So it will be next will be b times this minus b a square, and next will be b times this minus b cube. So if you take minus b out, you take minus b out, so what are you left with actually is minus b taken out, this is what you are left with, है ना। And similarly on R2 what the operation was, this will be 0, this minus this, right? So R2 minus a times R3, this was 1 minus times this plus 2 a square, that is a square plus b square, and when you apply this relation, so this is R2 minus a times this, a comes out and it will be 1 plus a square plus b square. You can check the calculations please. It will be twice of a minus ब्रैकेट में a माइनस a से मल्टीप्लाई हो रहा है सारा ये, ठीक है। तो उसके बाद हो गया a क्यूब और माइनस ए बी स्क्वायर। तो इसको जब आप सॉल्व करते हैं ये बन जाता है a प्लस ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर, यू टेक a आउट, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एंड लास्ट this will remain as it is. What can you do now? From first row you have this common, और जीरो के साथ तो कुछ भी कॉमन निकाल सकते हो। From second row also you have got this thing common, it comes out, it will become 1 plus a square plus b square का whole square, please keep it in bracket, and then it will be 1 0 minus b, 0 1 a, it will be 2b minus 2a, 1 minus a square minus b square. अब हम एक बड़े इंटरेस्टिंग मोड पे खड़े हैं। बहुत बार हम ये सजेस्ट करते हुए जब बच्चा कहता है सर मैं आई एम नॉट एबल टू थिंक अबाउट दिस ऑपरेशन, तो वी से ओके फाइन बेटा एक्सपैंड कर लो, बट फ्रेंड्स इफ यू रियली गिव इट अ थॉट इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड। ये है ना हमारे पास 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपको क्या चाहिए प्लस ए स्क्वायर, तो मतलब अगर प्लस 2 ए स्क्वायर आ जाए तो बात बन जाती है। देखो इसके सामने 2a है सामने या नहीं है, दिस इज इन C3, ठीक है ना। अगर मैं 1 तो एज इट इज है ही है बेचारा, इसमें से माइनस टाइम्स a टाइम्स C2 करूं तो बन जाता प्लस ए स्क्वायर, और ये कितना है माइनस बी स्क्वायर। अगर मैं प्लस 2b स्क्वायर करूं तो प्लस बी स्क्वायर बनेगा या नहीं बनेगा, तो प्लस b टाइम्स C1 कर दूं, तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग ऑपरेशन, दैट इज C3 पे ऑपरेशन लग गया C3 माइनस a टाइम्स C2 माइनस b टाइम्स C1। तो क्या हो जाएगा इससे, दिस विल बी 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर, राइट बॉस, it will remain as it is,
it will be as it is, and it will be what, C3 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस बी टाइम्स 1, ठीक है ना. तो आई थिंक इट वाज माइनस बी, सॉरी प्लस बी टाइम्स, आई एम सॉरी, दिस प्लस बी टाइम्स, हाँ. तो माइनस बी प्लस बी, इट विल मेक इट व्हाट, 0. एंड अगेन ए माइनस ए टाइम्स 0, और इसका तो बन ही रहा था. Isn't it interesting? So what will you do now is from column 3 you will pick this factor, because ये दो जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ता, take it out, ये बन जाएगा 1 plus a square plus b square का whole cube, and rest of the things will be as they are, 0 0 1 expanded with third column, you will get the answer. So this is very very interesting question. ठीक है जी, इसको अच्छी तरह से तैयार करना है आपको.